Welcome back, students. Today we are going to discuss an important topic regarding psychology, that is personality. Personality. You know, psychology, as a scientific study of adjustive behavior, concerned itself with almost all the aspects of behavior, from simple avoidance reactions in an unicellular amoeba to the highest levels of human mental and intellectual activity. Uniqueness in individuals, which marks his identity distinct from the others. Psychologists try to understand the individual as distinct person and which we called personality. So let's start. The outline of our discussion would be that we will introduce personality, that what it is. Then we will discuss the meaning of personality, the definition regarding personality, the concept of personality, the nature of personality, characteristics of personality, determinants of personality, stages of personality. So let's start from the very first one, that introduction. Uh, you know that while focusing on this area in psychology, that is personality, psychologists taps into a very interesting area of psychology that deals with the totality of person's existence. Uh, it is common one, and it helps us to understand the uniqueness and commonality which is found between the individuals. Uh, Psychologists who have specialization in this field of personality, in the area of personality, they try to measure personality, describe the individual differences, and they also assess the extent of such differences. So, in modern organizations, personality attributes of a manager are considered important since they affect the entire behavioral pattern of person. In common parlance, personality refers to the impression which an individual forms on others through his personal attributes, making effective or uneffective. So efforts have been in process in order to understand personality, and it has been considered as the concern of the thinkers for a long time. And so it have developed some theoretical approaches and some laws, some theories regarding personality. So it is a fact that psychological factors of an individuals are rarely known to others. Uh, An individual's personality is not a superficial fact or occurrence that can be easily understood merely on his personal appearance. Personality is the whole aspect of an individual from general point of view. It includes the person's physical, psychological, and emotional aspects. So it covers all. I mean, we cannot judge a person from its physical appearance. So it physical, psychological, and emotional aspects. All the three important aspects comes under the introduction of our understanding of the term personality. Personality, as far as personality itself is concerned, as we have discussed about it, sometimes we say that he has a lot of personality, or sometimes we say that he has no personality. Or some of the examples in daily life that we use the words like this. Phrase a lot of personality refers to the attractiveness of a person in reference, particularly on initial contact with a person. Poor personality refers to such attributes which are usually discarded because such attributes are either inappropriate or undesirable in a certain society. So the term no personality means that the person does not possesses any those qualities that may catch attention of the others. Uh,
So we can say that this is an effective one and prevailed in social situations. But there is no any such meaning are as such meanings are based on superficial or surface less surface level observations and evaluation of the persons, so hence are of little scientific value. Sometimes we say that while viewing personality, that it is to identify some striking characteristics or attributes of a person. Thus, we refer somebody as having aggressive personality, or to some we called shy personality. So such identification, these are our identifications of a personality categories. Are these are based on striking features of the person that distinguish that particular person from the rest of the people. But such meaning again too are based on superficial or surface level observations and interpretations. So now comes to the word term personality. It has been derived from the word Latin word persona. Here it is, Latin word persona, meaning to speak through mask, means meaning mask, especially worn by the. Then that mask has been in ancient days. Masks were worn in Greece and Roman and Greeks, and the Greeks always worn those masks. The Roman actors, while playing, they're performing in the theaters at that time in the old time, so while enacting plays. So this personality is used for influencing other through external appearance. However, personality is not the external appearance alone. This is important one. So Romans called it, for Roman the word persona refers to as one appears and not as actually is. It he or she may be but different, but that external appearance shows a personality. Yes, now comes characteristic attributes of personality. Personality which makes an individual to stand apart. It is the impression of characteristic attributes, and it is an aggregate of an individual's physical, psychological, and behavioral aspects contributing to his good personality or no personality, as I have discussed, according to the presence or absence of the characteristic attributes. Some of these, which are of significant nature, are worth mentioning, are here. Let's see. Characteristic attributes. Number one is omnibus. This personality view is the aggregate of recognizable patterns of properties of qualities. The certain one has accumulation of recognized patterns of qualities in a person. Omnibus. Integration and configuration. Under this view of personality, the organization of personal attributes is stressed: integration and configuration. Hierarchical. This aspect mainly deals with adaptation, survival, and evolution of the person to the environment. That, with the passage of time, you know that one acquires the knowledge of its environment. Adoption, adopt something, survival and evolution of the person to the environment, totally according to his in the environment where he or she is living. Next, distinctiveness. The definition of this category speaks the uniqueness of each personality, that each one has its own distinctive character. So this makes another definition or category of a definition with respect to personality. Now, personality comes to its meaning. Personality has long history. It dates from the time of the Greek physician Hippocrates, 460 to 377 BC. In order to understand the behavior of the people in organizations,
organizational setting, we need to know the basic nature of personality. It is a psychosocial phenomena which analyzes the cognitive features and presentation of individual in the society. It is a psychosocial phenomena which analyzes the cognitive features and presentation of individual in the society. Uh, a personality is made up of characteristic patterns of thoughts, feelings and behavior of an individual. पर्सनालिटी क्या है कि आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी बिहेवियर का एक आप उनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, यानी टोटल का सम अप हम कह सकते हैं इंडिविजुअल का। और ये एट्रीब्यूट आपको, किसी भी शख्स को बाकी लोगों से मुमताज करते हैं। और पर्सनालिटी ओरिजिनेट्स विद इन द इंडिविजुअल एंड रिमेन्स फेयरली कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है कि जो आपके साथ, और ये आपकी यूनिकनेस होती है, हर बंदे की, हर शख्स की यूनिकनेस है, और ये आपके अंदर ओरिजिनेट होती है, जो कि आपको दूसरों से अलग करती है। और पर्सनालिटी एग्जिबिट्स distinctive qualities of a person, especially those distinguishing personal characteristics that make one socially appealing. If a person wins an election on his own, society may say that she has won more on personality than on capability. अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी पर्सनालिटी की वजह से इलेक्शन जीते हैं। मिसाल के तौर पर कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी या जिस तरह से भी है। आगे चलते हैं मीनिंग की तरफ। मीनिंग में नेक्स्ट है, पर्सनालिटी इज द सुप्रीम रियलाइजेशन ऑफ द इनेट इडियोसिंक्रेसी, यानी ये इंसानों से उनकी उसके मुतालिक है, ऑफ ए लिविंग बीइंग। तो इट इज एन एक्ट ऑफ करेज thing in the face of life, the absolute affirmation of all that constitute the individual, the most successful adaptation to the universal conditions of existence, coupled with greatest possible freedom of self-determination. ये Young की है ये definition. It's very very important here with respect to the meaning of personality. एक और है कि पर्सनालिटी इज द रिलेटिव, आगे भी डेफिनेशन आ रही हैं, डेफिनेशन के अलग से उसमें। पर्सनालिटी इज द relatively stable set of psychological attributes हैं that distinguish one person from another। तो ये एरवन की डेफिनेशन से पीछे भी मैंने बात की थी कि वो आपके डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स हैं, आपके इनहेरेंट हैं, आपके जो अंदर जो खसूसियात वो पाई जाती हैं। सो ये आपको क्या करती हैं, दूसरों से डिस्टिंग्विश करती हैं और हर बंदे को दूसरे से। इसके मीनिंग में है कि द बेसिक कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी रेफर्स टू द पर्सनालिटी ट्रेट है। Many researchers have shown interest to know about individual personality as it is linked with behavior। तो हम ट्रेड की स्टडी करते हैं और हम ये कह रहे होते हैं कि ये बिहेवियर है। If one can predict the behavior of individuals, आप उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करने कैन बी डन इन अ स्मूथर way towards achieving the organizational goals. So each personality factor represents a collection of related or cluster of traits. So these cluster of traits determine whether the individual is achievement oriented, dominating, responsible, etc. तो पर्सनालिटी के हवाले से हम ट्रेड की स्टडी कर रहे होते हैं, पर्सनालिटी के मीनिंग की बात की जाए तो। अब हम आ जाते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशंस की तरफ। तो a large number of definitions are given in respect of personality in order to give meaningful। तो एक्सट्रैक्शन मैंने कुछ लिया है स्टैंडर्ड डेफिनेशन का। यहाँ देखें आप, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन आल्पर्ट, इसको आगे भी कोट करते रहेंगे, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment। उसकी यूनिक एडजस्टमेंट है किस तरह से उसकी किसी भी इन्वायरमेंट में। फिर फ्रेड लिथन्स डिफाइन द टर्म पर्सनालिटी कैसे, हाउ पीपल अफेक्ट अदर्स एंड हाउ दे अंडरस्टैंड एंड व्यू themselves as well as their pattern of inner and outer measurable traits and the person situation intervention। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन, रॉबिन्स
कहता है कि द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू एंड इंटरेक्ट्स अंटिल एंड रिएक्ट्स टू एंड इंटरेक्ट्स अंटिल अदर्स। तो उसका रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन को उसने सम टोटल इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के हवाले से रॉबन ने किया है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डिवोट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द मेथड्स ऑफ अफेक्टिंग अदर्स, reacting to others' actions, and interacting with others. So these methods are chosen by individual based on several factors. Important one among these is their traits or trait study. अब हम आ जाते हैं careful analysis of the above, definition of the following, observe the followings. यानी हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन हो चुकी है उससे हमने क्या चीजें ली हैं कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी may be defined as the characteristic pattern of behavior that determines an individual's adjustment to the environment or situation। ये बात तो कॉमन होगी कि तमाम डेफिनेशन से कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स हैं उसके बिहेवियर के कि वो इंडिविजुअल एडजस्ट कैसे करता है अपनी एनवायरनमेंट में या उस सर्टन सिचुएशन में। फिर उन डेफिनेशन से हमें ये भी मिलता है कि डिस्क्राइब्स हाउ एन इंडिविजुअल अफेक्ट्स अदर्स, how he understands himself, and his pattern of internal as well external measurable traits। आगे, it is the dynamic organization within an individual of those psychological systems which determines his unique adjustment to the environment। ये वही बात है जो रिपीट की जा रही है। It is the sum total of ways in which an individual reacts and interacts with the others। उस शख्स की लोगों के साथ रिएक्शन और इंटरेक्शन किस तरह से है, उसका तमाम का निचोड़। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ। पर्सनालिटी मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटल एज वेल एज द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी एक शख्स की मेंटल और उसकी फिजिकल, वो किस, वो मेंटली कैसे डील करता है और वो फिजिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये इसका क्या कहते हैं कि एक टोटल उसकी यानी एक उसका टोटल है, सम टोटल है। In his medical textbook, Principles and Practice of Medicine, Davidson states about personality, which is socially acquired after having a genetic basis over the course of time. The individual arrives at an adult psychological stage after passing successfully through a series of maturational stages। ये concept में आएगा। और Maxwell personality is the most advocate conceptualization of individual's behavior है, with all its details which the scientist can provide in a moment। आगे चलते हैं कंसेप्ट में मजीद के इन दी डेफिनेशन डेविडसन की जो है, देयर आर थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डेविडसन की डेफिनेशन में। सोशल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल ऑफ वंस पर्सनालिटी एंड इट्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सोशल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ये तीन चीज़ें हमें नजर आएंगी, सोशल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। और मैक्सिलेंट एज स्ट्रेस मेनली दी, उसकी डेफिनेशन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर घूम रही है बिहेवियर पैटर्न्स के एतबार से। अच्छा, hence both these definitions throw some light on personality development and individual behavior। Thus both these definitions have utmost applicability and usefulness in organizational behavior apart from the comprehensive approach made by Albert on the subject। आगे चलते हैं जी हम पर्सनालिटी के नेचर की तरफ। द नेचर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज एट्रीब्यूटेड टू हिज पर्सनालिटी। जनरली एन इंडिविजुअल asserts through his behavioral characteristics। Matured persons with their long standing experience take an objective attitude towards themselves and others, or they also introspect so as to help improve upon their nature and behavior। अच्छा, नेचर में ही हम देखते हैं कि नेचर में हम इसकी देखते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या चीज़ होती है? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर स्पीशीज। यानी लोगों, इंसानों में और दूसरी स्पीशीज में बड़ा फर्क है। The special feature of his nature is self consciousness। स्पेशल फीचर ऑफ हिज नेचर जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस आपकी कितनी है, और आपको अपनी आइडेंटिटी को या सराउंडिंग के एतबार से आपको अवेयर करती रहती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। दूसरे नंबर पर पर्सनालिटी के नेचर में आएगी अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट, कि आप एनवायरनमेंट में कितना किस हद तक अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको किस हद तक उसमें आप एडजस्ट हो रहे हैं। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है और ये वर्किंग है, या टेंशन तो नहीं क्रिएट हो रही, चैलेंजेस को आप कैसे फेस कर रहे हैं। और
आप उन चीज़ों को आप कॉन्फ्लिक्ट से या टेंशन से बच रहे हैं या अनप्लीजेंट चीज़ से बच रहे हैं, आप उनको रेज़िस्ट कर रहे हैं, तो अडॉप्ट कर रहे हैं आप उस एनवायरनमेंट में, उनसे झगड़ कर या किसी तरह से भी। अच्छा, आगे चलते हैं नेचर में ही नेक्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी में। गोल ओरिएंटेड के पर्सन स्ट्राइव फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। लोग अपने मकसद के लिए मेहनत करते हैं। इंडिविजुअल्स डू हैव द ड्राइव टू अचीव गोल। ज़ाहिर-सी बात है हर आदमी का मकसद होता है और wants needs lead to motivate. So the desire of individual directs the behavior for the fulfillment of the same. Both the physiological and social motives makes behavioral change. दोनों इसमें गोल गोल जो है वो आपकी पर्सनालिटी में वैसे तो अगर देखा जाए तो आपकी सिमतें मुतय्यन करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी क्या है कि पर्सनालिटी वर्क्स इन कंसिस्टेंसी बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस एक्टिविटीज मेंटल भी हैं और आपकी एक्सपीरियंस पर बेस करने वाली तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करके आगे लेकर जाना है इनको एक तरह से टुगेदर का लफ्ज़ इधर आया हुआ है तो इंटीग्रेट करके लेकर जाना और पर्सनालिटी डिफर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंटीग्रेशन पर्सन्स with developed personalities are highly integrated values of experience or this depends on the standard of behavior which they have acquired right from their childhood. इसकी अब करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तमाम बातों से हमें क्या नजर आएगा पर्सनालिटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कांस्टेंट होती है और पर्सनालिटी क्या है कोई एक ट्रेट की शो करने की बात नहीं है बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ है और कांस्टेंट चीज़ है पर्सनालिटी इज साइकोलॉजिकल बट इट इज़ यूज्ड बाय बायोलॉजिकल नीड्स एंड प्रोसेसेस बायोलॉजिकल नीड्स आप कर रहे होते हैं आपकी ज़रूरतें हैं लेकिन पर्सनालिटी साइकोलॉजिकल है ठीक है, बाज़ औक़ात आप वो चीज़ छोड़ भी देते हैं यानी बायोलॉजिकल नीड को क्योंकि साइकोलॉजिकल जो है वो डिटरमाइन कर रही होती है। तीसरी जो बात है पर्सनैलिटी कॉजेज़ बिहेवियर टू हैपन यानी पर्सनैलिटी की वज़ह से आप बिहेव कर रहे होते हैं। बिहेव की वज़ह से आपकी पर्सनैलिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि पर्सनैलिटी कॉज़ कर रही है बिहेव को तो पर्सनैलिटी कॉज़ हुई और बिहेवियर आपका क्या हुआ इफ़ेक्ट हुआ। आगे पर्सनैलिटी इज़ डिस्प्लेड थ्रू थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर एंड मैनी अदर वेज़ तो हमें जो आप एक्ट करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो परफ़ॉर्म करते हैं, जो बोलते हैं, वो डिस्प्ले है किसका? आपकी शख्सियत का, आपकी पर्सनैलिटी का। ठीक है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम आ जाते हैं इसकी डिटर्मिनेंट्स की तरफ। इसके 3 डिटर्मिनेंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं टॉप different theories propose different factors that determine individual personality. So the most popular research work done by Sigmund Freud deals with the identification of self concept है self concept में उसका including things like factor go by nature like germ यानी genes है hereditary and biological formation and by nurture through social और environmental factor ये 3 बातें उसने वो की हुई द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी तो क्या हुआ हेरिडेटरी भी हुआ एनवायरमेंटल भी हुआ और सिचुएशनल भी हुआ अच्छा अब हम देखते हैं कि हेरिडेटरी क्या है इसका डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट हियर इट इज कंसिडर्ड एज टेकन एज अ फैक्टर और क्या हेरिडेटरी फैक्टर आपकी पर्सनालिटी पर यानी विरासत आपकी या किस तरह से असरअंदाज होती है तो रेफर्स टू दोज फैक्टर्स व्हिच प्रीडिस्पोजेस टू सर्टेन फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स इट सेट्स द आउटर पैरामीटर ऑफ एन इंडिविजुअल यानी आपकी शख्सियत के जो आउटर पैरामीटर्स हैं उनको सेट इट आल्सो लिमिट्स द रेंज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स द अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ genes that are located in the chromosomes is passed around 20% to 50% from one generation to another generation ये वो करते हैं ट्रांसफर होते रहते हैं so the studies level study reveals that twins, though brought up in different places, exhibit similar characters. तो कुछ जीन्स की मुंतकिली से क्रोमोसोम्स से वो चीज़ें मुंतकिल होंगी पर्सनालिटी के हवाले से हेरिडिटरी इज द ट्रांसमिशन ऑफ क्वालिटीज from ancestor to descendant through a mechanism lying primarily in the genes. और इसमें हाई अचीवर्स हो सकते हैं और इस तरह से तो डायरेक्टली हेरिडिटरी फैक्टर है सारी उसमें कंसिडर होता है आगे हम देखते हैं एनवायरनमेंट आपकी शख्सियत पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है आपके इर्द गिर्द आपका माहौल जिसमें आप परवरिश पाते हैं ब्रॉट अप होते हैं सो द एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूड्स
अब वो एनवायरनमेंट में क्या है, आपकी कल्चर भी है, आपकी फैमिली भी है, आपकी सोसाइटी भी है, आपकी अपब्रिंगिंग भी, आपके एक्सपीरियंसेस भी हैं, और एक्सपीरियंसेस क्या हैं, दिस रिलेट्स टू द कन्फ्रंटेशन विद द फैक्ट विद डेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, सोशल ग्रुप से आपके रिश्तेदार हैं, भी दे बिलोंग। सो कल्चर जो है वो क्या है, हेल्प्स टू फाइंड द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन अ बिहेवियर। ये बड़ा फैक्टर है एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी के हवाले से। फैमिली एनवायरनमेंट क्या है, इट रेफर टू इंडिविजुअल्स अपब्रिंगिंग, यानी घर का माहौल कैसा है जो कि उसकी शख्सियत को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, उसकी सोशल सेटअप कैसा है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, और वो उसकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज होगा। फैमिली होल्ड्स क्या है, साइज ऑफ फैमिली कितना है, बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो वो ये सारी एनवायरनमेंट है जो कि उसकी पर्सनालिटी को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। The society makes an individual to play different roles, thus shaping his or her this personality. Society क्या करती है, आपकी पर्सनालिटी में बड़ा रोल प्ले कर रही है उसको शेप करने में, और environment tends to strengthen or weaken hereditary traits, और ये भी होता है कि ये डोमिनेट कर जाता है आपकी हेरिडिटरी या जेनेटिक उनके ऊपर। For example, when an individual interacts with the environment through speech, his speech organs guarantee that he is learning to speak. यानी आप जो है वो जिस माहौल में आप रह रहे हैं उसी माहौल को आप वहाँ अडॉप्ट करते हैं, तो आप जो जीन्स में ज़ुबान दूसरी लेकर आए थे लेकिन यहाँ आपने सीखते हुए ज़ुबान, सो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, और उसमें आप माहौल से बहुत लर्न कर जाते हैं और आपकी पर्सनालिटी पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आगे हम देखते हैं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन हैज़ एन इफेक्ट बोथ ऑन एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, ये उन दोनों के ऊपर इफेक्ट करता है। सिचुएशन डिमांड्स सर्टेन बिहेवियर। Various psychologists have discovered that personality trait matters to an individual in his or career, or being successful or unsuccessful depends upon how the individual control their behavior in various situations। यानी आप किस तरह से यानी मिसाल के तौर पर ना, एक कैंडिडेट अटेंडिंग एन इंटरव्यू में एग्जिबिट लिमिटेड traits, the other trait or behavior is concealed or not exhibited। तो सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आपने उस इंटरव्यू के टाइम पर आपने अपनी उन तमाम चीज़ों को कंसील करना है, उन तमाम ट्रेड्स को कंसील करना है, तो ये सिचुएशन डिमांड कर रही है। तो सिचुएशन आपकी पर्सनालिटी पर एक बड़ा फैक्टर रोल कर रही है, प्ले कर रही है। आगे हम देखते हैं इसकी जो 4 मेन स्टेजेज़ हैं पर्सनैलिटी की फ़ॉर्मेशन में, वो क्या हैं कि पर्सनैलिटी किस तरह से बनती है। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी फ़ॉर्मेशन कैन मेनली बी डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस, लाइक प्राइमरी अटैचमेंट है, दूसरे नंबर पर फैमिली रोल है, पीछे देख भी चुके हैं फैक्टर्स के एतबार से। तीसरे नंबर पर है एंटरिंग ऑफ अ चाइल्ड इनटू सोशल वर्ल्ड, और चौथा है एडोलेसेंट स्टेज। इनको थोड़ा-थोड़ा मैं आपके सामने मैंने ब्रीफ भी किया हुआ है कि प्राइमरी अटैचमेंट क्या है। It is a natural phenomenon that a child gets attached to the person's taking advocate care of a child. In this stage, the child, after a few weeks, starts responding with a smile to whom it is attached. बच्चा आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराना शुरू करता है. It is also requires nourishment for proper growth. Normally, it resorts to crying for satisfaction. तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन की नीड्स के लिए हमेशा बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, वो क्राई करेगा। तो प्राइमरी अटैचमेंट की वजह से हुआ हुआ है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड अ चाइल्ड इज रिलेटिवली पैसिव होता है एंड नीड्स अटमोस्ट केयर बाय दोज अराउंड हिम। तो प्राइमरी अटैचमेंट की चीज़ों का उसके ऊपर बड़ा असर होगा आगे चलकर। आगे फैमिली रोल एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेज इज बिटवीन 2 and 6 years, और ड्यूरिंग विच द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द फैमिली। 2 से 6 साल के दौरान बच्चे को समझ आती है कि उसका ख़ानदान क्या है, कौन से लोग हैं, किस इंटरेक्शन किस किस के साथ होती है उसकी हर रोज़, और सम नॉर्मल social and some social normalcy, etc. So it acquires sufficient knowledge to differentiate between father and mother, मेल एंड फीमेल। बच्चे को समझ आती है कि ये फीमेल है, ये मेल है, या ये फादर है, या ये मदर है, या ये मेरे घर का आदमी है, ये उनके। सो दिस इज 2 से 6 साल। अभी तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरे घर का उनका घर का, लेकिन मेल फीमेल का या मदर फादर का। तो दिस स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन चाइल्ड नीड्स केयर, अफेक्शन एंड रिकॉग्निशन कपल्ड विद रिस्पॉन्स टू ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। आगे हम देखते हैं कि एंटरिंग ऑफ चाइल्ड इनटू द सोशल वर्ल्ड। अब जब बच्चा जो है वो थोड़ा-सा ग्रो करेगा, तो वो अब सोशल सेक्टर में एंटर होता है, तो ही स्टार्ट्स एडहेरिंग टू द सोशल नॉर्म्स बाय एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन स्कूल लाइफ। ठीक है जी?
तो अब ये स्कूल लाइफ आ गई, इसकी सोशल एनवायरनमेंट आ गई है, ये ट्राइज टू बी इंडिपेंडेंट एज द मेजर पार्ट ऑफ द डे स्पेंड आउटसाइड होम, so the child imitates and adopts the qualities from friends, teachers and others. जी, बच्चा जो चीज़ें भी देखेगा, टीचर की बातों को भी आकर इमिटेट करेगा, घर में फ्रेंड्स की को करेगा, दूसरी लोगों की चीज़ों को भी, बातों को भी, मामलात को इमिटेट करने की कोशिश करेगा या करेगा। तो ये सोशल वर्ल्ड में आ रहा है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ें आ रही हैं। चौथा फैक्टर जो है, चौथी जो स्टेज है, वो है एडोलेसेंस स्टेज। यहाँ से जब बच्चा गुज़र रहा होता है, तो द चाइल्ड पर्सनैलिटी में शो मच फ्लेक्सिबिलिटी। ड्यूरिंग दिस पीरियड सर्टेन ट्रेट्स आर सेट असाइड सेट असाइड एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू ट्रेड्स टेक प्लेस। कुछ जो हैं वो हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और कुछ जो हैं उनकी जगह आ जाते हैं। दिस इज द टाइम when bodily and sexual developments do occur. A child normally has logical thinking between 7 to 8 years of age. 7 से 8 साल की उम्र का जो बच्चा वो लॉजिकल थिंकिंग कर रहा होता है, और when he attains the age of 13, तो there is every possibility of an एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करें, एंड प्रोसेस ऑफ रीजनिंग की, कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये सवाल आपसे पूछेगा। और इसको एडल्ट प्राइमरी स्टेज ऑफ एडल्टहुड की हम प्राइमरी स्टेज कहेंगे, कि वो आपसे ये सवाल पोज करेगा। होपफुली स्टूडेंट्स यू हैव लर्न टुडे from today's topic about personality. It was a introductory topic regarding personality, and in the next lecture we will cover Sigmund Freud personality and some other related things. Hope, thank you very much.